everyone. So today we are going to learn one more concept of class 1 chapter number 1, shapes and space. But before that we will see some worksheets. All these shapes of same size to each other. हमें सारे ये shapes को each other से एक दूसरे से मैच करना है उनकी सेम साइज पर. Let's start the activity. Say this shape is same as this one, this shape is same as this one is same as this one, and this smaller is same as this one. We have completed our worksheet. We have matched all the shapes of same sizes. See, in last worksheet we have matched the shapes with their same size. In this worksheet we are going to match same shapes. Let's start the activity. Look here, this circle is same as this circle, this shape is same as this one, this triangle is same as this one, this half circle is same as this one, and this shape is same as this one. So we have completed our worksheet. We have matched all the shapes same to their own shape. You can see 3 apples. Okay, one is big, one is bigger, and one is biggest. This is big one, this is bigger one, and this is biggest one. This is big apple and this is bigger. ये एप्पल बिगर क्यों है आपको पता है? बिकॉज ये बिग एप्पल से ये बिगर वाला एप्पल थोड़ा सा बड़ा है, लिटिल बिग है, इसीलिए इसे बिगर कहा गया है. और ये जो थर्ड एप्पल है वो बिगेस्ट क्यों है? बिकॉज जो ये बिग वाला एप्पल है और ये जो बिगर वाला एप्पल है, इन दोनों से ये वाला एप्पल बड़ा है, इसीलिए इसे बिगेस्ट कहा गया है. सो दिस इज बिग, दिस इज बिगर एंड दिस इज बिगेस्ट. लुक एट अ पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल. यू कैन सी 3 एप्पल. आप 3 एप्पल इस पिक्चर में देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज स्मॉल एप्पल, second one is smaller, and third one is smallest. This is a small apple. ये छोटा एप्पल है. But second one is smaller. ये फर्स्ट वाले से थोड़ा छोटा है और छोटा है, इसीलिए इसको स्मॉलर कहा गया है. और ये थर्ड वन स्मॉलेस्ट है क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों से छोटा है, इसीलिए इसे स्मॉलेस्ट कहा गया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन. ओके, see here, this is a hippopotamus and this is a dog. Now from both of these we have to choose bigger one. So bigger is hippopotamus. Okay, now here is a one leaf and here is other. From both of these leaves we have to choose smaller one. So this one is smaller one. Now we will go to next picture. This is squirrel and this is काव. ये स्क्विरल है और ये काव है. नाउ वी हैव टू चूज फ्रॉम बोथ ऑफ देम स्मॉलर वन. हमें छोटा वाला चूज करना है, तो दिस स्क्वेलर इज स्मॉल. नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर. यू कैन सी 2 बॉयज पिक्चर, दिस वन, दिस वन. नाउ वी विल चूज अ स्मॉलर टायर बिकॉज बोथ द बॉयज आर हैविंग टायर. सी, this one is one tire and this one is other one. Now from this both tire the smaller one is this one. Okay, so from this worksheet we have clear the concept of bigger and smaller. ये worksheet से हमने bigger और smaller का concept clear किया. Look here, now we will start with another worksheet. This worksheet is of the concept biggest and smallest. Okay, before starting this worksheet, you remember I have showed you the picture of apple. In that I have cleared the concept of biggest and smallest. आपको याद है मैंने आपको एक एप्पल का पिक्चर बताया था. 3 एप्पल थे उसमें मैंने आपसे बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट क्लियर किया था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. Look here, in this picture you can see 3 trees. 1, 2, 3. ओके, ये
थ्री ट्री में से आपको स्मॉलेस्ट वाला थ्रेड ढूंढना है, सबसे छोटा वाला. ओके, सो दिस इज स्मॉलेस्ट वन. नाउ come to next picture. Here it is a dog, here it is a cat, here it is a elephant. From this picture you have to choose biggest one, सबसे बड़ा वाला. So elephant is biggest one. Okay, now come to next picture. You can see some fruits. See, here is a mango, here is a watermelon, and here is a cherry. Now we have to search which one is smallest one. Okay, mango is smallest? No. Watermelon is smallest? No. Cherry is smallest? Yes, because cherry सबसे छोटा है, इसीलिए cherry is smallest one. Okay, now come to next picture. You can see the boy with a yellow t-shirt. Okay, ये boy क्या कर रहा है? ये बॉय गेम खेल रहा है, बबल गेम. ओके, नाउ उसके पास देखो यहाँ पे बहुत सारे बबल्स आए हैं ना, राइट? बहुत सारे बबल्स आए. फ्रॉम दिस बबल्स यू हैव टू चूज बिगेस्ट वन. हमें सबसे बड़ा बबल चूज करना है, राइट? सो दिस वन इज बिगेस्ट बबल. ओके, so from this worksheet we have learned about biggest and smallest concept, and from last worksheet we have learned about bigger and smaller. Okay, so now next concept we will conduct in next video. Till then, bye bye, take care, stay safe.